कि जंगल में जो पेड़ पौधे से पत्ते गिरते हैं वो सड़कर हमारी जमीन में आते हैं, तो हमें खाद का भी प्राप्ति होती है। और पहले चढ़ने का रास्ता नहीं थे, अभी श्रमदान से रास्ता भी बना लिए हैं। वहाँ भी लोग आसानी से ऊपर जाके आ जाते हैं, पूजा करते हैं वहाँ। और हर साल हमारे ये 1 जनवरी को धूमधाम से कार्यक्रम भी मनाते हैं 5 गांव मिलकर। और हर साल हरियाली अमावस को वहाँ 5 गांव मिलकर पौधा रोपण करते हैं। और हर महीने उसकी बैठक भी रखते हैं उसके बचाव के लिए। हर साल प्लांटेशन करने का बात की जी, मतलब हरा भरा हो गया है बायोडो। हाँ, अभी हरा भरा हो गया है। और मतलब हमें शुद्ध हवा भी मिलती है वहां से। बहुत से चिड़िया तितली वहाँ मतलब अच्छा दिखने को मिलते हैं। कई जानवर भी वहाँ रहते हैं। पहले तो कुछ नहीं थे, अभी पौधा लगाने से हरा भरा हो गए हैं, तो कई जानवर भी वहाँ देखने को मिलते हैं। और हर एक प्रकार की चिड़िया भी देखने को मिलती है वहाँ। महिला सभा में, और महिला सभा भी वहाँ हमेशा बैठक करती है। मतलब अच्छा लगते हैं वहाँ हरा भरा। इस प्रकार से टोले में भी बैठक करते हैं। और वहाँ भी पास में सिद्ध बाबा के पास में जाकर वहाँ बैठक करते हैं। और कुछ धन्यवाद। I think she has presented whatever she was supposed to present about the Sidha Baba Pahadi. Yes, we can show the slides. Yeah. Okay, should I translate it in English for other audience who are not comfortable in Hindi? Yes, that will be wonderful. Thank you. Yeah. So what Samptiya ji actually sharing is that it is just a minute. It is about one of the hillock, which is actually the center of their cultural belief, and it is also the worship place for 5 villages coming under the Kanharikala Panchayat. So at a certain point of time, she said that a woman actually used to go there for worship. So that actually created curiosity among the villagers that what that woman was actually doing there. So all went there, and they found that there is a temple, not temple, but there is some worship place where the woman was actually worshipping Lord Shiva. So then they took care of that hillock, and the hillock gradually converted into a forest. But later on, at a certain point of time, again the community did not pay any attention, so that gradually that hillock degraded, and it was actually created a sense of ownership of the community, that how that hillock can be revived. So all the villages in that particular panchayat, 5 villages are there. So they come together. They discussed initially all the men were the part of that sangathan, that is organization, those who are talking about the Sidha Baba Pahadi. But after that, women also started participating in it, and they also developed some bylaws around that hillock. And she also said about what are the rules and the regulations followed. Some of the regulations were that if anybody is actually seen and caught that person is cutting any live branches of any tree or live tree, then the person will be penalized with 5,001 rupees. And if someone is actually informing the village institution that someone was cutting that tree, then the person will be awarded with rupees 5.
500. So these are some of the rules and regulations in that area, and the open grazing was prohibited. So when this type of regulation actually implemented, the status of that particular hillock developed, improved. So now there are huge forests. There are people are noticing that different types of birds, animals are coming to that area. They are also noticing different types of butterflies. So biodiversity of that area actually improved a lot. And Mahila Sabha are taking initiative to conserve this area. When there was no women members, so the process was not complete. But now both men and women, they are taking a collaborative effort to conserve this site. And every year, the Mahila Sabha, after discussing with the village institution, they are organizing rallies, padatras to sensitize the people in that area, even the people in the neighboring villages, about the importance of conservation and importance of that hillock in that area. So there is contribution from neighboring villages also, and they are celebrating one festival on 1st January of each year, so that all people can come together, sit there and discuss about the importance of that hillock, and also take the necessary action further. So now that has been a point of attraction for the people, and even the people from district administration, they are also visiting that area to get a sense of the conservation processes undertaken by that panchayat, the people of that 5 villages coming under that panchayat. So this is in nutshell about that area. And I saw that there was a question that what was the process of formulation of a bylaw. Should I respond to that, or it would be better if Bai will, Samptiya Bai will actually focus on that? Okay. Yeah, sure. I think we will love to hear from her. Yes. नियम कानून बना था उस एरिया में, आप लोग कैसे बैठ के बनाए थे, उसके बारे में पूछ रहे हैं थोड़ा जानने के लिए। कि महिला सभा टोला बैठक किए, और टोला बैठक एक हर टोला में बैठक किए, फिर एक महिला सभा भी रखा गया, और महिला सभा करने के बाद फिर हर गांव में बैठक किए, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे 5 गांव बैठक किए, और बैठक किए, और फिर 5 गांव मिलकर वहां पौधारोपण किए, पौधारोपण किए, और फिर वहां नियम बनाए, हर पूरे 5 गांव मिलके बैठकर, और वहां नियम बनाए, अगर जो कोई पौधा काटेंगे उसे 5,000 1 रुपया जुर्माना लिया जाएगा, और जो देखेंगे काटते समय उसे 501 रुपया इनाम दिया जाएगा। आपका ग्राम सभा में उन नियम के बारे में चर्चा हुआ? हाँ, ग्राम सभा में भी नियम के बारे में चर्चा हुई, मतलब हर मोहल्ला, हर टोला में चर्चा हुआ, 5 गांव में, टोले मतलब टोला सभा में और महिला सभा में भी हुआ, और फिर 5 गांव मिलकर भी एक ग्राम सभा किए थे, उसमें भी चर्चा हुआ। तो अभी पेड़ पौधे नहीं काटते, क्योंकि नियम कानून के हिसाब से, और सब रक्षा करते हैं, वहां कोई काटते नहीं पौधा, और फल भी वहां से हमें प्राप्त होती है। और इन वर्ष तो 20 किलो ऐसे चाल तोड़े थे लोग, और खा के उन्हें बहुत प्रशंसा हो रही है, हमारी मेहनत अभी रंग ला रही है, ऐसे प्रशंसा हो रही है उन्हें अभी। 5 गांव मिलके काम कर रहे हैं। और एक सवाल था कि आपके जो सिद्धा पहाड़ी है, वहाँ पे कौन से प्रजाति के जानवर वापस आए? आपने बोला था कि बहुत सारे जानवर वापस आए हैं, चिड़िया वापस आई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप कि कौन से प्रजाति के जानवर वापस आए हैं? और एक और उसमें था कि आपको क्या लगता है कि क्या महत्व है उनका? कोई जो चिड़िया के बारे में बात करेंगे या जानवर की बात करेंगे, तो उनका क्या आपके वो सिद्धा पहाड़ी के लिए क्या महत्व है?
वो जानवर जैसे जंगली हिरन है, बंदर है, अजगर है और खरगोश है और पक्षी है, गरैया है और तोता भी रहते हैं सर। बड़े बड़े झाड़ है ना अभी, तो तोता भी रहते हैं वहाँ। तो मधुमक्खी रहते हैं, मधुमक्खी भी रहते हैं सर, शहद भी प्राप्त होती है वहाँ से। जी जी जी। तो इनसे आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदा हो रहा है? जी सर, अभी हमें पहले जड़ी बूटी भी नहीं मिलते थे, अभी पेड़ पौधों कई प्रकार के हैं तो हमें जड़ी बूटी भी प्राप्त होती है वहां से और फल फूल भी प्राप्त होते हैं वहां से। चार है, तेंदू है, भेलवा है, बेल है, महुआ है, इन सब प्राप्त होते हैं वहां से हमें। जी जी जी। एक और सवाल आया है कि सिद्धा प्रद्युम्न जी, आई थिंक यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दिस टू हर। Sidha belongs to 5 villages. Is there a practice to sit together and discuss about the Sidha Baba? 5 गांव में जो आपका है वो जी तो मैंने रेगुलरली अपनी नियमित तरीके से जी वो बैठते हैं और सिद्ध बाबा के बारे में बात करते हैं क्या? जी, बैठते हैं, हर महीने बैठते हैं और सिद्ध बाबा के बारे में चर्चा करते हैं और पेड़ पौधे और लगाएं और हरा भरा करें। ऐसे हर महीना बैठक होती है और चर्चा होती है उसके बारे में। और हमेशा दूर दूर के लोग भी आकर वहां चढ़कर देखते हैं। रोड बना दी है, अभी पहले साधन नहीं थे चढ़ने का वहां। अभी रोड, पहले पैदल भी चलना मुश्किल थे, अभी तो 4 पहिए भी चलने लगा। श्रमदान से बनाए हैं रोड अभी 5 गांव मिलकर, तो अभी 4 पहिए भी आसानी से चढ़ जाती है। जी शुक्रिया। बहुत आपके जो काम दिख रहा है कि आपके इतने जानवर और गाँव वालों को समझ में आ रहा है कि ये जो जैव विविधता है क्यों जरूरी है, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। धन्यवाद। Then we'll move on to the next presentation. धन्यवाद सर। One second. The second presentation, it is coming all the way from Uttarakhand. जो हमारे मोहम्मद मीर जी है, वो हमारा एक प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो ये लोग ये बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, वन गुज्जर्स के बारे में बात करने वाले हैं और जो उनकी जो कहानी है वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो मीर हमजा जी, प्लीज आपका प्रेजेंट शेयर कीजिए। मीर जी। एक सेकंड में उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक वो नेटवर्क एरिया से आते जाते रह रहे हैं तो शायद इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे। श्योर। प्रणव, यू कैन आस्क। मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ क्या? मतलब हाँ, अच्छा ओके। हाँ हमजा बस आपको बुला रहा है। we can share the presentation from our side. हेलो प्रणव। हेलो। तो वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है,
जी जी, कोई दिक्कत नहीं। आप उनका वीडियो भी ऑफ, उनको बोल दीजिए सकते हैं कि वीडियो ऑफ रखेंगे तो उनको बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी। ओके, ठीक है। और वीडियो हम लोग जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग शेयर कर लेंगे, आप बस प्रेजेंट कर दीजिए। जब तक प्रणव एंड हाँ, उनको थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्या टॉपिक है, और फिर जब हमजा भाई ज्वाइन कर पाएंगे तो वो जोड़ सकते हैं। या आई थिंक आप शुरू कीजिए एंड देन जैसे वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो फिर उसमें कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। मैं प्रणव हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैं अभी संगठन का साथी हूँ। तो पिछले 3 साल से मैं संगठन के लीगल काम में और एफआरए के इनके क्लेम्स के रिलेटेड कामों में इनकी सहायता कर रहा हूँ। तो ये जो फोटो अभी आपके सामने है, ये वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन की एक मीटिंग की झलक है, जिसमें काफी युवा साथी भी हैं, और बाकी जो साथी दिखाए हैं वो माई हैं, जो ट्रेडिशनल वन गुर्जर में जो पैस्टोरल काम का देखभाल करते हैं, वो उनकी एक झलक है ये। और संगठन के और भी बहुत साथियां, महिला साथियां भी हैं, पर ये एक झलक है कि एक रीसेटलमेंट एरिया के क्षेत्र में ये एक मीटिंग का एक झलक है। तो इसलिए ये स्लाइड हमने संगठन को इंट्रोड्यूस करने की कॉन्टेक्स्ट में हमने ये रखा गया था। तो ये संगठन का भी फॉर्मेशन तब हुआ क्योंकि वन गुर्जर काफी एरियाज में, राजाजी पार्क के एरियाज में इनको एविक्शन का थ्रेट फेस हो रहा था 2017, 2018, 2019 में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में संगठन ने मोबिलाइज करना शुरू किया अपने आप में, और 3-4 जगह में इन्होंने एविक्शन होते वक्त प्रोटेस्ट किया और रोका एविक्शन को। और इन सब एविक्शन को रोकने के वजह से ये संगठन अलग अलग जगह में हम मोबिलाइज करना शुरू किए। तो ये मैप है हमने बनाया था। ये मैप आपको बता सकता है कि गढ़वाल के रीजन में कौन से एरियाज में हमने संगठन का मोबिलाइजेशन किया है। और ब्रॉडली ये वाला जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो कुनाउच और गौरी रेंज के एरिया के ऊपर होगा। बट ये एरिया ये मैप आपको बता सकता है कि कैसे वन गुर्जर समुदाय सीजनल माइग्रेशन करते हैं बिटवीन समर एंड विंटर। तो नीचे के क्षेत्र में जो भी आपको जगह दिख रहे हैं वो उनके विंटर होमस्टेड है, और जो ऊपर के क्षेत्र में हिमालय के ऊपर आपको दिख रहे हैं थाच और जो बुग्याल है वो उनके समर होमस्टेड है। तो और बीच में 1 मंथ का इनका माइग्रेशन होता है, और बीच बीच में ये आप पड़ाव देखेंगे, पड़ाव वो रेस्ट स्टॉप होता है जहाँ माइग्रेशन के बीच में वो लोग रुकते हैं और ग्रेजिंग थोड़ा बहुत कर करके स्लोली 1 महीने में वो माइग्रेट करते हैं। क्या हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं? तो ये पर्टिकुलर स्लाइड का महत्व हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इंडिया में अभी फोर्ट्रेस कंजर्वेशन का मॉडल है जहाँ पे वनवासियों को जंगल नेशनल पार्क के क्षेत्रों से बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि वनवासी और जो वन्य जीव हैं वो साथ में नहीं रह सकते हैं। तो ये मैप हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की कोशिश की थी कि कहाँ हम कौन से क्षेत्र में वन गुर्जर रहते थे
और अभी के टाइम में सिर्फ वन गुजर मोहंड, रामगढ़, कुनाव के एरियाज में ही अभी पॉपुलेशंस हैं। बाकी सारे एरियाज में उनको बेदखल करके उनको बेदखल करके रीसेटलमेंट एरिया में पुश कर दिया गया है। तो क्या हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं? हाँ, तो ये एक एरियल मैप हमने बनाया था कुनाव के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुनाव आप देखेंगे एक साइड में गंगा नदी बहती है और ये बीच में एक ग्रासलैंड का थोड़ा बहुत क्षेत्र है, और ये कनाल है, और कनाल के इस तरफ दोनों ये रीजन्स कोर जोन में पड़ते हैं राजा जी के, बट कनाल के उस तरफ आपको घना जंगल दिखेगा, और ये इलाका जहाँ प्रेजेंटली वन गुजर के सेटलमेंट है, ये ग्रासलैंड इलाका है, और यहाँ पे भी पेड़ हैं और जानवर भी आते हैं काफी। बट लॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में काफी वन गुजर जो यहाँ रहते हैं वो कनाल पार करके उस तरफ जाके लॉपिंग का काम करते हैं विंटर सीजन में। क्या हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं? ये दृश्य भी ये आपको एक पिक्चरस दृश्य दिखेगा कि कुनाव चौड़ का ग्रासलैंड कैसे है। आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे इनिशियल टाइम में जब संगठन का उतना दबाव नहीं था इस इलाके में, तभी काफी क्षेत्र में लैंटाना वगैरह का ग्रोथ हो गया था। बट अभी संगठन की ओर से हम काफी कोशिश कर रहे हैं लैंटाना और ये सब चीज हटाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं? हाँ, ये पर्टिकुलर दृश्य इम्पोर्टेंट है क्योंकि वन गुजर कम्युनिटी के लिए गोजरी भैंस और जो उनकी आइडेंटिटी है वो काफी महत्व है। और ये जो गोजरी भैंस है, खास करके इसकी सींग आप देखिए, तो जितना इस गोजरी भैंस का उम्र बढ़ता है उतना ज्यादा ये सींग लंबा और कर्ल होते जाता है। तो एक इंडिजिनस भैंस है। इनिशियली गोजरी भैंस वाइल्ड बफेलो होती थी, बट इन भैंसों को समुदाय ने एक हिसाब से अपने परिवार के सदस्य मान के इनके साथ अपना जीवन व्यापन पिछले कई अरसों से करते आ रहे हैं। तो एक सिंक्रोनस रिलेशनशिप है बिटवीन द बफेलो एंड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इन दिस रीजन। बट NBGR की तरफ से गोजरी भैंस को अभी तक उतनी रिकग्निशन नहीं मिल पाई है, और खास करके अभी हम रजिस्ट्रेशन की ओर इसके पुश कर रहे हैं, और होपफुली ये जब से संगठन इस मुद्दे को लेके काम कर रहा है तब से काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को से हमको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस भैंस की, इस इंडिजिनस नस्ल की हम रक्षा कर पाए। तो ये एक दृश्य है जहाँ आपको कुनाव के ग्रासलैंड एरियाज के अलग अलग कैसे भैंस यहाँ पे चराने ले जाते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने ये दृश्य दिखाने की कोशिश की थी ताकि ऑडियंस को भी पता चले लैंडस्केप कैसा है ये रीजन का। तो आप देख सकते हैं कि काफी ग्रासेस भी हैं, और साइड में जो भी ट्रीज हैं उसमें भी कोई ट्रीज वहाँ के लोकल स्पीशीज हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं रिकग्नाइज करती है ए फॉरेस्ट करने के लिए, बट संगठन काफी अपने ये भैंस के सिंक्रेनेटिक प्रैक्टिसेस के वजह से भी कोई ये पेड़ उग जाते हैं। फॉर इंस्टेंस आगे के स्लाइड्स में आपको इसका मैं एक उदाहरण बता सकता हूँ। हाँ, तो ये एक दृश्य है जब जो हमने नक्शा बनाया था उसमें हम बता रहे थे कि एक फॉर्म ऑफ माइग्रेशन अभी, क्योंकि काफी परिवार बुग्याल तक माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पेशली क्योंकि बुग्याल के जो समर होमस्टेड है वहां पे भी नेशनल पार्क बनाया गया है। तो एक एडेप्टेशन की ओर से समुदाय गंगा के तट पे ही माइग्रेट करती है, खादर करके एक जगह में, जो वो नक्शे में दिखाया था। तो ये एक दृश्य है जैसे ये रेनी सीजन में ये भैंस माइग्रेट करने के लिए जा रहे हैं टूवर्ड्स खादर। तो हमने सोचा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वन गुजर के रोटेशनल ग्रेजिंग एंड सिंक्रोनस रिलेशनशिप बताने के लिए कि कैसे उनके एवरीडे लाइफ में ये माइग्रेशन कितना अहम भूमि रखता है।
क्या हम नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं? ये दृश्य हमको ये दिखा रहा है कि कैसे ये भैंसों का ख्याल रखना पैस्टोरल लेबर में कैसे रिलेशनशिप्स रहते हैं कि अलग अलग रोल हाउस होल्ड के लोगों के मेंबर्स के रोल कैसा है, और उसका एक कैसे कम्युनिटेरियन एस्पेक्ट है कि जो हम इनिशियली देखते थे कि डोमेस्टिक लेबर और पैस्टोरल लेबर में एज सच डिस्टिंक्शन नहीं था जब महिला और पुरुष दोनों सारे काम करते थे, बट ओवर टाइम जब आप रीसेटलमेंट एरिया में देखोगे तो ऐसे दृश्य कम नजर आएंगे जहाँ भैंसों का ख्याल उतना रखा जा रहा है और फैमिली के हर मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये पैस्टोरल लेबर में। और मोर एंड मोर आपको ये पता चलेगा कि जो महिला का भूमिका है वो सेडेंटराइजेशन और रीसेटलमेंट की वजह से कम होती जा रही है, और जो जो महिलाएं अभी भी जंगल में उनकी रिलेशनशिप जंगल के साथ काफी है, और इवन पैस्टोरल लेबर में उनका एंगेजमेंट काफी है। विमेन भी लॉपिंग और ग्रेजिंग के काम में पुरुष का सहायता करते हैं। तो ये दृश्य वो दिखा रहा है कि क्या महिला की भूमिका भी कैसे ये पैस्टोरल लेबर के कॉन्टेक्स्ट में प्रमोट कर रहा है संगठन इन अ वे। आगे अगला दिखा सकते हैं। हेलो, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, मैं हमजा भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उनका शायद नेटवर्क आ नहीं रहा है। फिर से मैं एक और बार उनको पूछ लूंगा, बट अगर हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो। या श्योर। ये एक प्रैक्टिस हम इस जो मैं प्रीवियस एग्जांपल बता रहा था कि काफी क्षेत्र में ग्रासलैंड्स भी हैं, बट जो तुम आसपास के ट्रीज को भी देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर ट्री यहाँ पे हेलो, यस, हेलो, Yeah, your voice is breaking up in between. Okay, so I was trying to explain how certain trees which exist in this landscape. One of the trees is called gutel in the Gojri language, and gutel tree, the dispersal of seed for this gutel tree is often facilitated by the buffalo itself. So in a way, because of the trampling and the movement of the buffalo also enables in a lot of seed dispersal activities in and around the grassland areas. So in a way, the trees which the Gujars rely on for lopping, they are regenerated based on such practices where the Gojri buffalo also facilitates in the dispersal of the gutel seed. Can we go to the next slide? This image again shows of how there are different times where how the synchronicity of the one Gujar way of life is seen at different times of the day in relation with the buffalo. So in the morning you would see the buffalo engage in milking practices, then they would be taken to graze in this patch, then after a certain time then they are taken to the deep forest where they eat the leaves from the log plants, then during the afternoon they come back and then they rest in such pools. So this was one image of how buffaloes also take moments of rest in the afternoon sun, and such pools are also common near the Ganga river, which we saw in some of the previous slides. So in the summer season as well as in the winter season, a lot of riverine islands and riverine islands and oxbow lakes are formed where the buffaloes are then taken to relax and rest as well as drinks water in that regard. So
the everyday life of the one Gujar is knotted around the buffalo's shift schedule in a way. Can we go to the next slide? This particular image was trying to indicate about the different kinds of grasses which exist in this area, and Hamza had explained some of these grasses to have different qualities. Like for instance, one grass called as uh, uh, bhar grass is useful for the livestock's long health and ensures the blood stream of the buffalo is maintained. Certain other grasses, the one which you see on the right, is an example of a grass which ensures that the milk productivity of the buffalo is continued to be maintained. I wish he was here to explain some of the intricate ideas around this grass. This image is an example of how within the grassland space, how refertilization takes place, and how these dung facilitate in the growth of newer grasses across seasons, as well as within forests also. This movement facilitates creation of fire lines. Can we go to the next slide, please? This is an example of a Gujar pastoralist engaging in lopping. So the reason why we wanted to show this image was to show how the buffalo consumes when lopping exercises are undertaken. Next slide, please. This particular image was an example of also in the role of the buffalo to maintain certain forms of the use of how certain insects facilitated in enabling a reduction of fire in the region, and in and around because of the presence of the buffaloes, this insect was prevalent in that region. Could we go to the next slide? Yeah, so this is a typical image which you would see in Kunachod about how, despite a lot of on the left, you would see the elephant also consumes similar plants as the buffalo. So the lopping of the one gujar also helps in the consumption for the elephant also. And on the right, you would see the presence of large amounts of herbivorous populations like deer around the deras of the Van Gujar because they feel more safe from apex predators like tiger in the region as well. Similarly, they also have a relationship with the tiger where it's not necessarily an antagonistic relationship, although there are instances of tigers attacking the buffalo, but at the same time, there is a recognition of, okay, that this space may have more tigers, so we should avoid going from this path and try to guide the buffaloes from another path. So in a way, despite living in the core region, there are examples of how we can see coexistence, and coexistence must not be seen in the context of complete in this way of binary where forest dwelling communities are constantly are always uh, having favorable views with regard to wildlife presence, but also not in an antagonistic way where they cannot be existing with wildlife at all. So there is a need to reorient how we see coexistence. The next slide, please. This is an example of an other traditional herb called as patan, which is used for treatment of wounds. And then there are many other such examples of herbs which the Van Gujar Sangathan is trying to record in this landscape. So we have tried to create a record book of the different kinds of species and how traditional knowledge of the Van Gujars, be it with regard to ethno-veterinary support or with regard to personal healthcare support, how such herbs help. Next slide, please.
Just a second, Ivan. Pranam, sorry. Yeah, please continue. We'll just start Okay, the. so apart from this, I think the other slides just were showing about how there is this particular festival which the Van Gujars engage in, which is called as Sela Parab, and this is practiced every monsoon season at the onset of monsoon, where the Van Gujars engage in uh, uh, planting of certain species which are beneficial for them. This image shows how the area when they migrate to the Bugyals, like in the summer season, where some families continue to migrate to areas in higher up in the Himalayas for grazing. So we just wanted to show this image in a way to highlight how there's that seasonal migration even till date is practiced among certain families amongst the monkeys. Can we go to the next slide? Yeah, this is also an example of a traditional herb which is present, which we find more in the Bugyal region. Some of these herbs are useful for treatment of different kinds of illnesses for the buffalo itself, like I mentioned earlier. Next slide, please. So to conclude, this is one part where we wanted to highlight the role of the Sangathan in engaging in this festival called as Sela Parab. So it used to be a traditional festival which has been revived in the last 2-3 years by the Sangathan, where they engage in planting of local species, especially those species which are ignored by the forest department, and certain species like Gotail, Maljan, Symbol, and such species that ensure there is continuity between the for the livestock as well as for and as well as promotes the vegetation in the area. Next slide, please. This is an example of how the community engages in participatory mapping exercises, as well as how the whole process under the Forest Rights Act is being practiced with regard to understanding the different genealogical histories of different families residing in regions. So in a way, the Sangathan is helping the Van Gujars mobilize around these ideas of using and record some of these traditional practices so that claims can be filed under the Forest Rights Act. Next slide, please. Yeah. This is this image is of 2020, where Rafi, one of the Mai, had got an award for in recognition of his role as a pastoralist safeguarding this Gojri breed. So we wanted to show how last year also the Sangathan was awarded in 2021 in the Breed Pastoral Award. And in the context of the International Year of Rangeland and Pastoralist, which is going to be conducted, commemorated in 2025, 2026, there is increased impetus for the need for recognition of this breed, as well as recognition of such landscapes which are necessary for this breed. Next slide, please. I think this is an example of how the Sangathan intends to divide different areas belonging to different compartments belonging to different families. And in a way, this is a way of assertion of claim, and hopefully through such demarcations, we can develop better management plans for these regions. And the last image, I think, is of the map of Kunao itself. So the larger boundary you see around yellow is the community forest rights claim which the Sangathan is intending to file, and the inset map in the blue area is the regions where families continue to exist. So largely in even within national parks, there is a necessity to recognize the role of such pastoral communities engaging in their practices of pastoralism, as well as
what their contribution can be towards biodiversity and conservation. Thank you. I'm sorry, for some reason Hamza has not been able to join, but I think he was expecting the presentation to be slightly later. So, Yeah, Pranav, we can see Meer Hamza in the participant list. So can he, is he able to talk? Can you check with him? I've tried to contact him on 3 times, but he's not been able to get the network. So, okay. We have 2 questions for you regarding the presentation. So could you tell us more about the relationship and the attitude of Forest Department regarding the work you guys do? So initial times, like I said, the Sangathan was formed in 2017 in response to how the Forest Department intends to evict these companies. I think Hamza is here now. Maybe he can speak for some time. I think Pranav, we can see Meer Hamza ji. His video is on. Hamza, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आपने प्रणव जी आपने डिटेल से बता दिया है, और क्योंकि मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम था, मैं थोड़ा सा नैनीताल में हूँ, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम से तो मैं बीच में नहीं जुड़ पाया हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैं थोड़ा बहुत सुन पाया हूँ, जो भी मीर जी, आप थोड़ा अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं तो शायद आपको बैंडविड्थ मिलेगी। वीडियो ऑफ है मैं भी। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो अभी मेरा आवाज सुन पाते हो ना? आपका आवाज कट क्या आ रहा है? अभी शायद यहाँ पे नेट अगर मैं वो क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ अराउंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्या अभी जब हम संगठन की ओर से ये काम कर रहे हैं, तो इन अ वे थोड़ा बहुत रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी, कि हम ये काम कर सकते हैं, कंजर्वेशन का काम वन गुजर संगठन भी कर सकता है, बट एट द सेम टाइम काफी इलाकों में अभी भी बेदखल करने की मांग की गई है, और एक ओपिनियन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि रीसेटलमेंट ही बेटर ऑप्शन है, स्पेशली नेशनल पार्क के क्षेत्र में। तो इन अ वे कोई एस्पेक्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता है, जैसे सेला पर्व के टाइम में काफी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ भी आके पार्टिसिपेट करते हैं ये प्लांटेशन में, बट एज सच हमारी मांग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यही है कि जब कैंपा जैसे इतने बड़े स्कीम में उनके पास इतने फंड्स आते हैं, तो वो क्यों हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ वो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब फंड्स? तो वो एक क्वेश्चन है जो ज्यादा गौर करने की जरूरत है, अगर हम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के ऑटोनॉमी और कंजर्वेशन कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जो कोएग्जिस्टेंस की बात है, तो हमको ये कोएग्जिस्टेंस के क्वेश्चन में भी थोड़े बहुत सोचने की जरूरत है कि कैसे वन विभाग का जो ओपिनियन है कि जंगल में अगर वनवासी रहेंगे तो जानवर नहीं रह सकते हैं, वो खास करके एक बहुत मायोपिक ओपिनियन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन को नहीं समझता है, और कैसे समुदाय इतने टाइम से जानवरों के बीच में रह के भी उनको बिना नुकसान पहुंचाए वहां वो रह सकते हैं, और उनकी भी प्राइवेसी हो। अगर एपेक्स प्रेडेटर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि संगठन के वन गुजर कोई पोचिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, इनफैक्ट पोचिंग को पकड़ाने में काफी वन गुजरों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सहायता भी की है, बट ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। थैंक यू। एक और सवाल है, इन द मैप ऑफ राजाजी नेशनल पार्क देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ सेटलमेंट्स, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? तो अगेन ये अंडरस्टैंडिंग है कि
हम कैसे मैप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटलमेंट हम रेवेन्यू लैंड के हिसाब से देखते हैं और फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से देखते हैं, बट एक्चुअली काफी सारे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज ऐसे भी हैं जो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, बट उनको उनके लैंड के लिए रेवेन्यू स्टेटस नहीं दिया जाता है। जैसे ये कुनाव चौड़ के बगल में ही एक दूसरा गांव है जहाँ पे रेवेन्यू स्टेटस दिया गया है, बट और वहाँ पे बहुत डिस्पाइट बीइंग इन द कोर जोन वहाँ पे रेवेन्यू स्टेटस दिया गया है और वहाँ पे बड़े बड़े टूरिस्ट रिसोर्ट बन रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम पे अगर आप टूरिस्ट रिसोर्ट को सपोर्ट करेंगे, बट ऐसे कम्युनिटीज जो रहते हैं फॉरेस्ट में उनके लैंड सेटलमेंट्स या क्लेम्स को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो फिर कॉन्जर्वेशन को आप सिर्फ एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए देखते हो रादर देन फॉर लुकिंग एट कंजर्वेशन एज अ होल। क्योंकि ह्यूमन और नेचर में ये जो डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है ये सही नहीं है। और अगर हमको कंजर्वेशन के आइडिया को बढ़ाना है आगे और बायोडाइवर्सिटी को भी उसी लेंस से देखना है, तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज का रोल जो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में हो सकता है उसको भी बढ़ावा देखने की जरूरत है। आई होप दैट आंसर्स। अच्छा, इसमें पन्ना आवाज सुन पा रहे हो? जी मीर जी बताइए। सॉरी मैं दो, हाँ, अभी जो चर्चा चल रही थी बायोडाइवर्सिटी को लेकर और अभी इंसेक्ट के बारे में एक पिक्चर पन्नो जी ने बताया है। जो हमारा जो एरियाज है जहाँ कम्युनिटी के लोग रहते हैं और संगठन ने सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम किया था उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो इंसेक्ट को लेकर रही थी। हमने ये देखा है कि जो लॉपिंग है, जैसे गुटेल ट्री है जिसके लीव्स को खाकर जो है कैटल्स के जो डाइजेसिस वगैरह की जो डेलिसिस है उसको खत्म करता है। और वो जो है जितना भी ये लेंटेना जो होता है, गुटेल्स और गुटेल का जो ट्रीज है ये जो है लेंटेना को खत्म करता है। इसको जो है सीड्स डिस्पर्सल के माध्यम से हमने कुनाव चौड़ में जो है इसका जनरेशन करवाया था। और इसके बाद जब इसकी लॉपिंग होती है, उसके बाद लॉपिंग की जो ब्रांच जमीन सॉइल में 3 से 4 महीने तक मिलकर फिर उसके बाद जो उसका जो खाद बनता है स्नैक के माध्यम से, वो जो खाद होता है वो एक नया ग्रास पैदा करता है। उस ग्रास से जो वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिक एनिमल्स ये खाकर एक बायोडाइवर्सिटी को जो बहुत बेहतर तरीके से बनाता है, ये प्रक्रिया हमें सबसे ज्यादा उपयोगी रही है। और ये हमने जो देखा है कि पूरे लैंडस्केप में जो नेशनल पार्क के जहाँ जहाँ कम्युनिटीज रहते हैं या फिर अदर्स जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें जितना भी ग्रेजिंग से जो पेस्चर लैंड है उसमें जो जिस तरीके से इस तरीके की जो स्नैक के माध्यम से जो खाद बनी उससे जो ग्रास निकलता है, ग्रास की अलग अलग क्वालिटी है। जैसे हमारी कम्युनिटी में सीड है या फिर बाबर, या 2-3 जो प्रकार के ग्रास है, ये बहुत ही उपयोगी रहते हैं इसलिए क्योंकि ये तो मृदा अपरदन को रोकते हैं और दूसरा जो है जो वाइल्ड एनिमल्स है वो उसी में आके ग्रेजिंग करते हैं और उसी में लेपर्ड और टाइगर्स जो है आराम से उसकी पोचरिंग करते हैं। तो ये जो चैन बना हुआ है और जो शायद पर्ण जी ने बताया उस टाइम में नेटवर्क में था, जो गोजरी ब्रीड है, गोजरी ब्रीड के द्वारा जो ये स्नेक का जो खाद और जो ग्रास है और तीसरा जो फॉरेस्ट फायर रोकने का जो ट्रेडिशनल कंट्रोल्स है वो सिर्फ ब्रीड की वजह, ये गोजरी ब्रीड की वजह से हो रहा है। और सीड्स डिस्पर्सल की अगर हम बात करें तो जो जीजीफस मॉर्शना, टर्मिनल टोमेंटोसो, टर्मिनल ब्लेरिका और मोलोटस जैसे ट्रीज है जो हमारे लैंडस्केप के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत अच्छे तरीके से पूरा इन्वायरमेंट, चाहे वो बर्ड के कंजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे जो है विभिन्न प्रकार के ग्रास सॉइल कंजर्वेशन की बात कर, तो कुछ जो ट्रीज है वो अपनी भूमिका स्पेशल निभा रहे हैं नावचौर के लैंडस्केप में। इस ट्रीज की जो भी पॉपुलेशन बढ़ाने में गुजर की मेन भूमिका रही है। तो वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन ने इसको लेकर ही हमने इसकी महत्व को जाना, कम्युनिटी के और लोगों के साथ बैठे और उससे ये चीजें हमारे 20 से 25 साल पहले यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी थी और अब कैसी है और इसको कैसे कंजर्व किया जाए, और जिसमें सबसे ज्यादा जो है कंजर्वेशन की जो भूमिका निकल पाई वो गोजरी ब्रीड की निकल पाई। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, शायद पर्णो जी ने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होगा। सॉरी क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं था, तो नेटवर्क की वजह से मैं काफी चीजें नहीं देख पाया हूँ और ये छोटी सी मेरी बात थी इसके बीच। धन्यवाद मीर जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने कि आपकी जो कहानी थी बहुत अच्छे से समझाई। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Pranav, for your presentation. We'll move on to the next presentation. The next presentation is all the way from the beautiful state of Nagaland. It is going to be presented by Ivan, and he's going to tell us a story about the success story in the CCA, in the CCA they are working in, and what all activities they did to preserve their CCA. जैसे क्या क्या काम किए उन्होंने. तो please, Ivan, over to you. Hello, good morning. Ivan, just let us. Yeah, hi, Ivan. Just let us know when you want to change the slides. Okay, fine. Am I audible? Yeah, you're audible, Ivan. Okay. To develop biodiversity conservation and livelihood network, that is Zhimomi district in Nagaland. That is our network of the CCA. Next slide, please. This is the background of the organization. Our network is an NGO joint management by the three villages community. That is CCS, Sky, Raki, and Kivik. That is our network. Network is located at the Zhimomi district of Nagaland. The network, it harbors so many endangered and threatened species like blight dragon, fishing cat, and wild dogs. Next slide, please. Management committees, that is the governing body constituted by the representative of each village, that is Gaon Bras, village council chairman, CCA management committee chairman and secretary, and village development board secretary with three advisors represent, that is one each advisor from the each village. There is three advisors that is constitute the management committee. Next slide, please. These are the agencies and NGOs partners like Forest and Climate Change, State Biodiversity Board, Nagaland Tourism Department, that is the government department, and NGOs like Dehuri, Titli Trust, Balibara Foundation, FES, Agri and Allied Departments, KVK, NU, NEPAD, and NCCF like Nagaland Community Conservation Areas Forum. Local NGOs like Green Club Zhimomi, that is, we initiated the club in the district. Next slide, please. Our main objective is to reviving the traditional practices of biodiversity conservation, agricultural support system, culture and tradition, creating large network, promoting nature ecotourism, creating friendly environment and mutual benefits. That is our main objectives. Next slide, please.
These are the key activities that major key activities that we have undertaken by the network. We are with the support of Dehuri, the Energy Resources Institute of India. We have prepared People's Biodiversity Register for the 3 villages. That is the great success and achievement, and with the community participation and community intervention. We have also prepared a long-term management plan with the support of Palipara Foundation, FES, Foundation of Ecological Security. We have prepared, that is how we should our vision plans and management plans, that is with the support of FES. We have completed with the ideas and interest taken by the community, how we should lead forward our activities. We also initiated nature-based ecotourism, cultural tourism, agricultural tourism, and we have, in order to promote those nature-based ecotourism, we hosted biodiversity meet annually for the assessment and monitoring our biodiversity with the local and also with the external agencies. Through this biodiversity, we can promote the ecotourism, and also the community building for local community to run the tourism activities and biodiversity. Next slide, please. Our network to encourage the environment enthusiasts and youth, that we have initiated Green Hero Awards. We, in order to reduce the land management system and soil management, we have, and also to support the livelihood of the community. This is, we have initiated agroforestry and habitat restoration with the support of Balipara Foundation Assam. That is, these are the picture how we want that livelihood of the people should be improved with the small acre of land in order to improve the land management system, that is, and also improve the livelihood. That is the reason we have introduced this agroforestry model. We have also initiated, like, to help the farmers. We used to organize farmers market annually to the nearest town and cities to help the farmers and improve their livelihood. We have initiated this kind of farmers market to improve their farmers technique and gain the knowledge. We usually organize exposure trips to the neighboring state and even international
also we used to organize such kind of, even this year, the 10 farmers were taken to Philippines to let the farmers interact with the others sustainable agricultural practices and to have interaction with the other farming community in abroad. That is the reason we initiated this year. We have taken 10 farmers to Philippines so that they can gain the best practices. That is also one of our major events that is we have taken. Next slide, please. Next slide, please. Our network organized the local biodiversity festival. That is, we call it the Chengu Festival. That is Great Barbet Bird Festival, in order to promote our biodiversity awareness camping, our culture, and also promote the tourism, nature-based tourism. Since the people of Nagaland, fishing, hunting, Jom cultivation, that is all related to, and also the biodiversity that is interrelated with one another. So during this festival, we used to promote biodiversity awareness campaign with the students. We also, during this festival, we used to promote our culture and tradition, and also during this this biodiversity festival, the farmers were promoted for their market. This is the one of the main keys that lead the success of the conservation, since the Naga peoples, we have a rich culture diversity, and during the festival, the 3 villages showcasing their culture activities, and also it bring more relation and cordial with the network villages, and also it could promote the nature-based ecotourism and agricultural activities, marketing activities. And during this festival, most of our target is for capacity building training to the student and youths. Women section is all, this is all about our biodiversity festival. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. These are the impacts that has been created, that we have promoted 28 homestay in 3 villages, 16 youths were trained as local guides. And there is also direct employment generation, like we have created 6 youth as a forester that is employed by the Balipara Foundation Assam, and promoted 2 youth as a wildlife photographer, 18 youths as a forest guard that is supported by Terry with the honorarium. This is the economic
impact. Next slide, please. Our final survey recorded in our area, that is, and so now we have recorded 222 species of birds, 200 species of moth, butterflies, and more than 200 species of moths, and 31 reptiles, 11 amphibians. These are recorded. Next slide, please. These are the endangered species that is we are conserving in our areas, like Chinese pangolin, Himalayan black bear, clouded liver, fishing cat, civet cat, blight dragon. These are our endangered species that is present in our area. Next slide, please. These are the awards and recognition, like India National Biodiversity Award 2018, Balipara Foundation Award 2021, Nagaland Governor's Award, State of Nagaland, that is 2022 this year. Next slide, please. These are our rare discoveries in our area, like Mandarin trinket snake, IMSA singular moth, Cosmotola Hanstein moth, that is first time from Nagaland, and Granada Lucidaria moth, that is the first time recorded from India. These are the we have recorded from our area. And next slide, please. No. Sure. There is one slide at my hand that I'll tell the audience. Traditional practices of protecting aquatic ecosystem, that is the elders does not cultivate their land till the river for the wildlife corridor and aquatic biodiversity, which is sustainable and based on our traditional practices. That is our system of conserving the river. The main source of our livelihood, that is fishing, hunting, that is our traditional practices, and consuming the bush meat and fishes, that is the food habit, and it has a medicinal and nutrient purposes. We have also find that a reason for depletion of aquatic ecosystem, that is over exploitation of aquatic biodiversity due to the huge market demands and uses of dynamites, batteries, and chemical in the river. That is the main reason for the depletion of aquatic biodiversity, and that is the reason we have initiated that reviving the traditional practices to avoid such practices. That is the reason we have initiated and started taking the initiative of assessing the aquatic biodiversity
in our area, and we are yet to start, and our activities main objective is focusing to survey and monitoring the aquatic biodiversity, which is ignored or not so far research in our area, and we are initiating the and taking forward with the expert to assess and monitoring the aquatic biodiversity. That is, as of now, that is our main concern, and we are looking. This is our main focus for aquatic biodiversity, that we also not only we want to take this sector, aquatic biodiversity sector. This is the next year that our target is to. Our main focus is target on the aquatic biodiversity that have to be assess our aquatic biodiversity, and we want to bring out the biodiversity register, especially the aquatic biodiversity. That is our main concern. And we also want to, since the people of Nagaland, all the biodiversity, culture, and tradition, it's all related with the biodiversity. That is, and it has a direct interlink with one another, like zooming, fishing, hunting. So we want to bring out some indigenous hub development for the in order to preserve our culture and tradition, and since it's all related with the biodiversity, that is the main. These are the main that is our concern. When we look into the last point, that is last slide, when we look into the challenges and way forward, that is livelihood security should be ensured, incentivizations of the initiatives, convergence of schemes, and also the capacity building to the community at the grassroots level in all across the district and Nagaland. That is what our targets, and these are the challenges that we are having as of now. This is about our conservation activities and Ivan, please our conclude. mission and 10 seconds objective. to conclude. Yes, yes. Yes, please. No, Hello? please, yeah, requesting you to conclude, Iman. Yes, yes, I've concluded. Yeah, thank you very much, Iman, for sharing such wonderful presentation regarding your the activities taken in your CCA. It's really a beautiful area. I think we all should come and visit. Definitely come and visit. Thank you, sir. Thank Sure. you. Most welcome. There is one question regarding how much effort did it take you to stop the hunting, bring the ban? What kind of effort did it take? Can you share some experience? Proper identification, that is since fishing and hunting is their main source of their livelihood,
That is the reason I've identified the affected target group, that is like fishermen and hunters. That is, I properly identified those person, and they have taken on board. They were felicited and offer like a homestay that is created for those hunters. See, as of now, they are hunting as of now, they are hosting the tourists instead of went for hunting. That is the one of the reason of our success story. That is, the hunters now they've turned as homestay owners. That is, and that brings improve their livelihood. That is what I can say. Yeah. Thank you, Ivan. Thank you very much for sharing your presentation. Now we'll move on to the next presentation. That is going to be from Mongal Bhai Dehuri. He's from Odisha. He's going to share a story regarding the work they have done for bat conservation, which is really interesting, and we would love to hear from him. Please go ahead. Are you audible? Your voice is breaking, but you're audible. Very remote village. Please requesting the presenter to stick to timeline. We are running a bit late. Thank you. If the voice is breaking, should we stop the video or what? Now voice is clear or what? Yeah, voice is clear. Please go ahead. Okay. माननीय मोर ना होचे मोगल दौरी परमाकांत ग्राम केन्दुझर जिला बांसपाल ब्लॉक निकटस्थ परमाकांत पंचायत रे हमर जंगल पहाड़ घेरा अंचल ए अंचल रे आमे किछि बादुड़ी पूर्व पुरुष रु रही आछंती तेणु से बादुड़ी पाई आमे सुरक्षित पाई गाँ लोकों को डाकी मीटिंग करी बसई तांकु बुझेइछु जे बादुड़ी गोटे निरपेक्ष जीवन स्वार्थवादी नुहे से निज पाई लोकों को बहुत प्रकार सचेतन करिवा माई से माने आज हम पाखे रहिसंती गाँ लोक को डाकी बसई एते कथा बुझेला परे हमर पीएस भाई को मध्य किछि कहिलु जे भाई माने ए बादुड़ी मान को कि प्रकार में सुरक्षित हबु तेणु एटा हमें 1962 मसीहा रु मध्य बादुड़ी रही आसुंती तेणु एमान को शिकारी माने नष्ट करूछंती तांको पक्षरे केमती कोन करा जिवो से माने या भितरे गुटे संपर्क बेगिर कथा कइले जे देखंतु बादुड़ी सुरक्षित करिवा माई हमें किछिटा गुटे आपण मान को स्नेह संपत्ति दबु तेणु आपण माने सेथिरे समस्त मिली मिसी सुरक्षित करंतु तेणु मीटिंग बसी आमे गाँ लोकों को डाकी बुझेलु जे बादुड़ी को जे मारिबे तांको पाई 5000 टंका जरिमाना करिवा आ बादुड़ी जंगल तयारी करि पारुछंती आज वन जंगल तयारी करि हमको केते प्रकार शांति दउछंती ब्रह्म मुहूर्त रे मध्ये हमको सचेतन करूछंती तेणु बादुड़ी होउछंती निर्दोषिक प्राणी तेणु आमे से पर्यंत बादुड़ी को एपर्यंत सुरक्षित रे रखी आनी कि एपर्यंत बादुड़ी हम ग्राम रे परमाकांत ग्राम रे 1.5 लाख 2 लाख पर्यंत बादुड़ी रहिले तेणु से बादुड़ी पाई किछि ना पानी रो टिके सुविधा हे पारंता बादुड़ी पाई किछि सुरक्षित टिके हे पारंता किछि सहानुभूति जदि सरकार को पक्षर मिली पारंता ताहले आउ टिके सुरक्षित होय बादुड़ी माने निरपेक्ष प्राणी हे के समय रही पारंता बादुड़ी पाई हमें ए प्रकार लागी रही तेणु आपण मान को स्नेह समृद्धि दे कहूछु जे बादुड़ी पाई किछि टिके पानी रो व्यवस्था रहू
आ बादुड़ी कि प्रकार आ टिके सुरक्षित रहिबे से प्रकार आपनक पाखरो जदि किछि गुटे न सम्मति आसंता ताले आ टिके सचेतन हे बादुड़ी रहि पारन आ मंदिर जोठी बादुड़ी रहउछंती से मंदिर टी होचे तारिणी पीठ से पूर्व पुरुष राजमूल रही आसी आमे से पीठरे देहुरी काम करछु तेणु से मेढ़रे रहउछंती किछि गछ वृक्षलता थिला गोटे बड़ गछ थिला से बड़ गछटा भी मरि जाईछि से भितर किछि गछ भी रोपण हेबा आवश्यक दरकार तेणु से पीठटा भी उन्नत धारा कहि परंदा निकटस्थ गोटे पोखरी अच्छे सुखिला पोखरीटा से मरम खणी आम खोलुलु से किसी पानी अच्छी से पानी पीऊँगी तेणु से जिनसा जब पारता पानी सुरक्षित हो पारता ताले बादुड़ी मैंने निश्चित सुरक्षित होकर पारते आ बाहर को जो पानी पीवा जाऊँगी शिकारी फिकारी बाहर मारी दौरान तेणु सुरक्षित निज पाखे जब रही पारते बादुड़ी निश्चित सुरक्षित रही पारते बादुड़ी गोटे निर्जीव प्राणी एत सुंदर प्राणी न कहले सर So now I will translate it. Mongal Bhai is from Dharmakand village, which is situated from in a dense forest area, and from around 90s, this place is known for its bats habitation. From generations, people are conserving bats here, and it is a part of their own culture and part of their own tradition. But after this 2000, some people came from outside and they started hunting the bats, and they also influenced the villagers to hunt bats, and they are purchasing the bats in a high rate. So when these common villagers find this, that is a issue, because the bats help them how to create a forest, because bats eat different kinds of fruits and they throw the fruits in different places, which creates a forestation in the forest areas. That is a natural seeding by the bats. Not only that, the bats also perform like a fan. He was telling that when bats are flying, it's creating a very good wave in the air, which is making the air more purified or more because when bats are flying, it is making like a fan-like system, and it's a part of their culture, because there was a temple of Mandir. Tarini temple was there, so it is a part of their culture and tradition. So they are preserving these bats. So this village committee decided that who will hunt the bats, they will be fined of rupees 5,000, and that also imposed very strictly in the village. As people who are doing the hunting of bats, they are identified and they are charged with these fines. And also he is telling that these bats are going out of the village for drinking water, because there is no proper source of water. There is a very small pond, but that is not sufficient. So when these bats are going outside of the village, other villagers are hunting them. So they are expecting a help from MGNRGA or from the government, that we can create a drinking water pond for the bats, so that they don't have to go outside of the village and they can be safe. According to him, there is around 1.5 lakh bats in their village. They are staying in that Kurumo land. So that's it. People can ask questions. Yeah, thanks, Saswaji. Thank you for the beautiful presentation. Bats are usually considered superstitious. There are a lot of superstitious beliefs behind bats, and I'm happy to see that people here, like Mongal ji, is conserving these species. So we'll just are the villagers able to convince the surrounding villagers to do the same?
for conservation of bats. ବାଦୁଡି କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହାଟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଯାଉଛି, ମାର୍କେଟ ରହୁଛି ଶନିବାର ଆମର, ସେ ଶନିବାର ମାର୍କେଟରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଯାଏ, ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଯାଏ। ବାଦୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ମାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କି ପ୍ରକାର ଦବା ଏ ପ୍ରକାର ବୋଲି ଆମେ ବି ହାଟ ଗୁଡାରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦଉଛୁ। So to spread the awareness, they do campaign in different hearts of the village, different markets of the village, and also in the block market to spread the awareness about bat protection. And semane manuchandi, but some people are accepting and some people are not accepting, but they are trying their best to spread the awareness. Yeah, thank you very much, Mongal ji, for your presentation. Thank you, Saraswatik. We will now move on to the next presentation. The next presentation is all the way from Andhra Pradesh. This has been given by Gopal Reddy ji, where he's going to talk about the Tree Growers Cooperative Society. They have been trying to, they have been restoring the common land, the revenue wasteland, over the past two decades. So, Gopal Reddy ji, please continue. गोपाल रेड्डी जी, आप म्यूट पे है शायद। विजय शेखर सर को बोलो अनम्यूट करने के लिए। हाँ विजय अनम्यूट చేయండి ఒకసారి। హలో విజయ్ వినిపించట్లేదు। నీరిగిటి వారిపల్లి పత్తికోట గ్రామము ములక చెరువు మండలము మా ఆ కొండ సండ్రకొండ సంస్థ పని కార్యక్రమం చేసుకున్నాము। దాంట్లో ఫస్ట్ మేము అంత పల్లి ఉమ్మడుగా ఆ కొండ అభివృద్ధికి తెచ్చుకోవాలని మేము కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి కొండలో చుట్టూ ఇది కలమందం నాటించి దానివల్ల మాకు ఉపయోగం అని బోడుగుట్టలాగా ఉంటే పక్క పనులు అన్నీ ఒక మాకు అనుకూలంగా చేసుకొని మేము దాని ఒక అభివృద్ధి తెచ్చుకొని దానివల్ల మేము బాగా ఉపయోగం చెందాలని పల్లెంతా ఒక 60 మంది కట్టిలయ్యి దాంట్లో బాగా ఇది చేసుకున్నాం సార్। అన్న చెప్పండి ఇంకా మళ్ళీ అట్లే చేసుకోండి సార్। దాని బాగా ఆ కొండల చుట్టికారము ఈ కలమందం నాటించి కంజులు కట్టించి వాటర్ గలీజి కంటులు కట్టించి ట్రెంచులు కొట్టించి ఉపాధి హామీ కూడా దానికి సహాయం చేసి బాగా ఇది చేసి మాకు ఆ కొండ వల్ల బాగా ఉపయోగపడి చెట్టు జామ ఉంటే అన్ని ముందు బోడుగుట్టలాగా కొట్టేసి గాడిల కట్లు మీద గాడిలు కొట్టే వేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉండి మళ్ళీ వచ్చి దాన్ని మేము నిర్ణయం తీసుకొని భద్రించినాం। భద్రపరిచి దాంట్లో ఉపయోగం మేము పని చేసుకుంటూ అది మాకు ఒక ఆదరగా ఉంటుందని బోడుగుట్టలాగా ఉన్నది ఒక ఆదరగా ఉంటుందని మేము దాని ఒక నిర్ణయం తీసుకొని పనిచేసి కొండ కాలకుండా పక్క పల్లెలో అగ్గి పడకుండా పక్క పల్లెను కూడా ఒక ఇది చేసి భద్రించి అక్కడ కట్లు మంచి చెడ్డ కొట్టేసి అగ్గి పెడతామంటే ఆ పల్లెను కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మేము పోయి చెప్పి వాటికి మా మాట ఇటగ్గిచ్చేసి కట్టులు కొట్టేసినారు। కొట్టేసింటే మేము పోయి అడిగితే మా మీద తిరగబడి వాళ్ళకు స్టేషన్కి పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చి వాళ్ళు స్టేషన్ వాళ్ళు పంపించి అతని మీద ఒక 1400 వసూలు చేసి నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉంటే నా మీద పెట్టి వాళ్ళంతా చేరి ఇతను ఎట్లా చెప్తే అట్లా అని నేను 1400 వాళ్ళ ఊర్లోనే పట్టుకొని పెద్ద మనిషిని ఇట్లా చేయకూడదు మంచి ఇది మనకు అందరికీ ఉపయోగంగా ఉంటుందని చెప్పినాను సార్। మళ్ళీ వాళ్ళు 1400 వసూలు చేసి మా ఊరిగా ఆ కొండ సంస్థగా ఇచ్చినారు, ఇట్లా పావుడు దాంట్లోకి
మేము కాపలా ఉన్నా కూడా ఆ కాపలా మీద మనిషి కూడా తిరగబడినారు సార్ అతను. మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మేమందరం పోయి చెప్పారు, వాళ్ళు కూడా ఒక నిర్ణయంగా ఆ పల్లి సపోర్ట్ ఉండబట్టి మా కొండకు అగ్గి రాకుండా ఏం లేకుండా చేసినారు సార్. ఇప్పుడు మేము కూడా ఎక్కడైనా అగ్గికి పడినా కూడా మేము పల్లెంతా ఇప్పుడు 60 మంది ఉన్నాము, 60 మంది పోతాము. మా ఆడోళ్ళు మగోళ్ళు అంతా పోయి దాన్ని ఏదన్నా ఒక నిర్ణయంగా ఆర్పి ఇచ్చేస్తాం సార్. మళ్ళీ దాంట్లో ఇప్పుడు మాకు ఆ టెంచులు కట్టడం వల్ల మాకు మంచి ఫలితం ఇచ్చి భూములకు చెరువుకు ఒక కారుకి అయ్యే నీళ్లు కారుకే తక్కువ వస్తుంది. ఇప్పుడు 2 కార్లకు అవుతాయి, 2 కార్లకు అయ్యి మాకు ఇంకా మిగులుతాయి. అట్లే సార్ ఇప్పుడు మాకు ఇంకా దాంట్లో కూడా కొంతమంది ఉమ్మడిగా ఉండి ఊర్లో ఆ 1400 రూపాయలు తెచ్చి మా ఊర్లో కాపలా మనిషి పెట్టింటే ఆ కాపలా మనిషిని కూడా లేకుండా ఆ 1400 చీటి పెట్టి ఆ కాపలా మనిషికి 600 నెలకు 600 ఇచ్చి మేము ఆ మనిషి పెట్టుకొని ఈ చీటు అందరం వేసుకొని చీటు పాడి దానికి అతనికి సాయం చేస్తాం. ఇప్పుడు మళ్ళా దాంట్లో లేకుండా ఆ మనిషిని కూడా మనమే ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు మంచి మగవాళ్ళము అందరము కొండ చుట్టికారం ఉంటామని వాళ్ళు కావలి మనిషి లేకుండా మేమే అదోట్లోకి తెచ్చుకొని ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకొని అది 1400 తెచ్చి సీటు పెట్టుకున్నాం. సీటు పెట్టుకొని ఊర్లో ఎవరికన్నా పేద కుటుంబాలు 10-15 దాకా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏదైనా సహాయం చేసుకొని మేము ఆ సీటు నడుపుకుంటూ ఏదైనా దేవస్థలాలు కాడ ఏదైనా కార్యక్రమం ఊర్లో ఏదన్నా ఊరి పొలాయిలు పోయినా ఇట్లా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా 60,000 రూపాయలు ఉంది. ఆ ఊర్లో ఒక ఆయమ్మ వాళ్ళు ఆరు మొగుడు ఉంటే వాళ్ళకు ఏదో ఇబ్బంది వచ్చిందని ఆయమ్మకు క్యాన్సర్ వచ్చింటే చెయ్యి తీసేసింటే ఆయమ్మకు ఒక 5,000 రూపాయలుగా దాంట్లో 10 మంది చేరి తీసి సహాయం చేసుకొని ఇప్పుడు కూడా ఆ చీట్ నడుపుకుంటున్నాం. మళ్ళా ఆ కొండలోని వాటర్ అంతా ఈ టెంచులు ఇవన్నీ కొట్టిన దెబ్బకు ఆ వాటర్ అంతా వచ్చి కొండ కిందకి మా బావులు కూడా బాగా ఫుల్గా వాటర్ ఇప్పటికి బాగా అభివృద్ధి అయింది. చెరువు 2 పంటలకు అవుతా ఉంది. ఆ నీళ్ళంతా వచ్చి చెట్లు పెద్ద దట్టమైన అడవి మాదిరి అయిపోయింది. అప్పుడు బోడిగొట్టలాగా ఉంది. దాంతో ఇంకా జీవనాధారం జీవాలు గొర్రెలు మేపుకుంటాము, ఆవులు మేపుకుంటాము. ఇప్పుడు బాగా చెరువులో పోయి నీళ్ళు తాగుతాయి. కొండ కింద కూడా ఊరి ముందర కూడా ఆ గుంతలే కల్లా నీళ్లు ఊరి పోతా ఉంటే తాగుతాయి. ముందు ఎడారిగా ఉండే. ఇప్పుడు మేము చేయవలసిన పని ఏమంటే ఉపాధి కాపాడిన దానికి దాంట్లో మనకు సమర్థలో కాపాడిన దానికి ఇప్పుడు గొర్రెలు మేపుకోవచ్చు. ఆ కొండలో ఈతాకు వాసవి అమ్ముకుంటారు, సీతాపురం కాయలు అమ్ముకుంటారు, పరకోసలు అమ్ముకుంటారు. జీవాలు ఇది జంతువులు జింకలు తయారైనాయి, నెమ్ములు ఊరి ముందరికి వస్తున్నాయి. ఇంకా పచ్చులు అన్ని అభివృద్ధికి వచ్చేసినాయి. దానివల్ల మాకు ఇప్పుడు బాగా నందనవనంగా ఉంది. చెప్పండి. 15 ఈ చెట్లు గోజంతువులు కూడా 15 రకాలు 20 రకాలు ఉన్నాయి. చెట్లు పెంపకం వల్ల చెట్లు కూడా మంచివి అన్ని జాతులు చెట్లు ఇంప్రూవ్ అయినాయి. వేప చెట్లు, సీతాఫలం చెట్లు, కానగ చెట్లు, ఇంకా రకరకాల చెట్లు కూడా అన్ని ఎక్కడ పెద్ద అడవుల్లో ఉండేటివైనా దీంట్లో బాగా వృద్ధికి వచ్చినాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా దాన్ని మేము ఊరంతా చేరి ఒక సంఘంలాగా అట్లా పెట్టుకొని దాన్ని కాపాడుకుంటా ఏదన్నా వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ వలస బాకుండా తగ్గిపోయినారు. ముందు ఎడారి మాదిరి ఇప్పుడు పచ్చని చెట్లు అయిపోయినాయి. కింద భూముల వరకు కూడా మొత్తం చెట్లు, వేప చెట్లు కన. ఎందుకంటే అది మేము అదుపులోకి తెచ్చుకుని దెబ్బకు వలస బాకుండా కూడా ఇక్కడే మాకు ముందు మేమంతా వలస వెళ్ళిపోతాం. జీవాలు గన కర్ణాటకలో అక్కడ గొర్రెలు కానీ తోలుకొని వెళ్ళిపోతాను. ఇప్పుడు మాకే ఓ 15-20 కుటుంబాలకు గొర్రెలు ఉన్నాయి. ఇంకా మిగతా బంటుకు 5-10 ఉన్నాయి. మేము అక్కడ అడవి దగ్గరికల్లా ఆ కొండ అరకల్లా మేపుకుండేది. ఏదే ఏమన్నా పడిపోతే కట్టు గిట్లు ఊర్లోటోళ్ళు ఎవరైనా తీసుకెళ్తారు. ముందు గాడిదలో ఎక్కువ కొట్టేస్తా ఉండే. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా ఎవరు లేకుండా మా దగ్గర ఉండే వాళ్ళు పల్లెల్లో ఏమన్నా పడిపోతే ఎత్తుకొచ్చుకుంటారు. అది లేకుండా కూడా పడిపి చెదులు పట్టిపోవచ్చింది. ఇప్పుడు
మాకు అది ఇది తయారైనప్పటి నుండి మేము అదుపు చేసినప్పటి మాకు చాలా అభివృద్ధిగా ఉంది. పరకోసల జీవనం చేసుకోవచ్చు, సీతాఫలం కాయలు అమ్ముకోవచ్చు, ఆ మాతకాకులు అమ్ముకోవచ్చు. ఇట్లా జీవనం మాకు బాగా జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ సంస్థ ద్వారా ఇప్పుడు కూడా మా పల్లి ఏదన్నా అభివృద్ధిలోనే ఏదన్నా దానివల్లే కదా మేము అతనికి వసూలు చేసి 1400 దాని సీటు పెట్టుకుంటా ఇంతవరకు మా కార్యక్రమం జరుపుకుంటా. ఇప్పుడు కూడా ఊర్లో ఏదన్నా దిక్కు పేదలకు ఎవరికన్నా ఆపద వచ్చినా 150 లేదన్నా అకస్మాత్తుగా ఏదైనా ట్రాన్స్ఫారం పోయినా మేము దాంట్లో తీసుకుంటా. కొలాయిలు పోయినా 10 మందికి కావాల్సిందే, ఒకరికి కావాల్సిందే అట్లేం లేదు. అట్లా చేసుకుంటూ కార్యక్రమం నడిపిస్తున్నాము మేము. ఇంకా చెప్తారా? చెప్పండి. ఇంకా కూడా సార్ మేము ఏదన్నా కానీ ఆ పల్లి తగింది, ఆ కొండకు తగింది, మాకు ఎక్కడ మేము చూసే ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ అట్లా సమస్తగా అట్లా బాగా సమృద్ధిగా తయారు చేయడం లేదు. కొండ కాల్తామని కూడా మేము 60 మంది సంచులు అద్దుకొని ఇట్లా నీళ్ళు ఎత్తుకొని పోయి ఆర్పిండే టైం కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఏమింగా పక్క పల్లెలు కూడా మేము బదిలించినాం కాబట్టి మేమే పోయి ఎట్లుంటుందంట మన పెద్దల కాలంలో ఇట్లున్నది. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అయిపోతే ఎడారిగా అయిపోతే ఇట్లా ఒకరి మీద ఒకరు పెట్టుకొని పోటీలు పెట్టి అగ్గి మంచి చెడ్డ పడిపోతే మన జీవాలు మనము ఎక్కడ పోతాము అని ఆ పల్లెలు కూడా మనము దీంట్లోని పోయి చెప్పి మేమందరము పోయి ఒక 10-20 మంది పోయి ఆడికి చెప్పి దాన్ని ఇట్లా జాయింట్ పని వాళ్ళు చెప్పి శేషాలకు మేము మా మాట ఇన్ని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మా కొండకు అగ్గి రానిరు. వాళ్ళు కాపడం అంటే ఇక్కడ మాకు రాదు. వాళ్ళు ఇది చేసుకొని మాతో మాదిరి ఇది వాళ్ళ బుట్ట కూడా బాగా అభివృద్ధిలోకి తెచ్చుకున్నారు. Okay, now Santosham Anna. So I will translate what he is saying. First slide, Rahul. So he is Gopal Reddy is from Nirigattavarpalli village from Tambalapalli BLT area. So he do the agriculture. He grows groundnuts and paddy tomatoes. So he is the president of the village institution Sandrakonda TG Max village. Next slide. So this is a background. He is recollecting 20 years back what is the situation of that particular village. This is a entire hillock is there is no tree at all, only few grasses here and there. Otherwise it's a full there is no vegetation at all in that particular hillock. He is saying that before that there is a lot of tree felling is happened by the villagers in the even outsiders of the village. They will come and carry bullock carts and head loads to their places, so that entire hillock become as a drain during that time. Those 60 households from these two villages who are depending on this particular hillock, they form a TG institution, and they started restoration activities, various restoration activities in that particular village. He's saying that they built a lot of gully plugs to arrest the soil from the going down. Next slide. You can see in the picture this gully plug, this stone structure got filled completely with the soil. There are many structures like this. He is saying that. And the entire patch of land they surrounded with the stone wall as well as the agave plantation. They planted many trees in this particular patch so that we could see plenty of trees and the various grass species are coming in that particular area. They spent around 6 lakhs rupees on that for 5 years to regenerate particular hillock. Then later on, they converse with the NREG department. They take up the works, trenches, and the other. So apart from this, they
any encroachments or else any nearby villages, they used to put the fire in that particular hillock. So they gone their village and they convinced their village. They also formed into another institution. They also started conserving from the other side of this hillock. That is how this entire hillock got regenerated. He's saying that one person, they chopped the particular trees in that particular during that time. So they find that person with 1400 rupees. They collected and deposited in the institution. They collected few more funds from the wage also during that time. They revolved in the village, that particular fund. Now, right now, they have 60,000 rupees as a corpus. They are spending some of the amount for temple kind of activities, and if it has any issues in the drinking water and the tap repair. And they recently they gave 5,000 rupees to the one woman who affected from the cancer. So that is how the institution is interlinking with the community very well. So if at all anything will come, means any outsider from the government department and the political part, they all come to village institution and discuss what to do and all. So that is how they got the recognition. So right now, this hillock is like a forest. You can't imagine this particular area surrounding 20-30 villages. This become a role model for the other villages. So you say any plant you can find here, and he's saying that there are plenty of peacocks and deers. Lot many birds are there in this particular hillock now. So the village, they collect many things from this hillock now, NTFP, broomsticks and honey and many fruits and seeds they'll collect and sell in the nearby villages, and they consume themselves. And they collect only the dried woods, not the fresh wood at all. So the whatever protection rules, bylaws were made during that time, it is followed by the villagers as well as the other villages also, so that this protection is happening. And he is even recollecting the fire instances, how it is happened and how they protected, and entire 60 households they gone there, and they carried the headloads of water to arrest the to put up the fire. And even night times also they will go and put up the fire. Still that that particular norms are still working in that particular village. So they are saying that we have a good fresh air and the environment is very good in this village. There is no migration from this village to the outside. That is what he is saying. Thank you. Thank you, Gopalji and Ramesh sir. There are a couple of questions here. So one question is, what sort of challenges you faced over the 2 decades? Can he share those challenges? అన్న ఏం చెప్తున్నారంటే, మీకు ఏమన్నా వేరే రకరకాల సమస్యలు ఏమొచ్చాయి, దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు అంటున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ 2-3 చెప్పారు. ఒకటి అగ్గిపడకుండా ఎలా కాపాడుకున్నామని, తర్వాత వేరే వాళ్ళు వచ్చి కట్లు కొడితే ఏ రకంగా మీరు రెస్పాండ్ అయ్యారని చెప్పారు. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చెప్పేది? ఇంకా మాకేం ఇప్పుడు మేము అందరం ఉమ్మడిగా ఉన్నాం కాబట్టి ఏం సమస్యలు అట్లాంటివి రారు సార్. ఇప్పుడు రానేరు. ఏమన్నా వచ్చి మనకు వీళ్ళంతా ఉమ్మడిగా ఉండారు, మాకేమన్నా మేము పోయి దాంట్లో ఏమన్నా చేసినా కూడా వీళ్ళంతా వచ్చి మమ్మల్ని ఏదైనా ఇచ్చేస్తారని రారు ఎవరు. కానీ పక్క పల్లెలు కూడా ఒకరు ఉంటే అట్లా ప్రాబలంగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మానుకున్నారు. వాళ్ళకి అట్లా సమస్య మేము వాళ్ళు కలిసి ఒక ఇదిగా చేసేందుకు అప్పటికి ఒక కట్టుదట్టం లేక వచ్చేసింది. ఇంకా మాకు అట్లా ఏంటి సమస్య లేకుండా దీన్ని నడుపుకుంటూ ఆ ఊర్లో ఇట్లా సమస్యలు వచ్చినా దీంతోనే ఆ డబ్బులు ఏదో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పాడకుండా ఎవరికన్నా సహాయం చేయాల్సింది చేసుకుంటూ
ఇప్పుడు కూడా పండుగలు వారాలు ఇలాంటివి ఏమన్నా వచ్చినా దాంతోనే అభివృద్ధికి ఇంకా మా చేతిని నూరు అవై చేసుకొని అభివృద్ధి చేసుకుంటా ఉన్నాము. మా కొండ మేము బాగా ఇప్పుడు ఒక ఇదిగా సమస్యగా చేసుకుంటున్నాం. So initially we got a lot of challenges with regard to fire and the encroachment kind of things and the tree felling. But right now the villagers and the other villagers, nearby villages, they habituated the whatever the bylaws they enforced in that particular village institution. So right now nobody dare to come and chop or else encroach to even department also. So that much is assuring that. So there are no challenges now. Again, he's saying that if at all anything required to the hillock, they have a money with them, so they will spend little on the if at all any requirement is there. That is what he said. Another question is, what was the role of women and youth in the area? అన్న సార్ ఏమడుతున్నారంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు అంటే యువకులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు తర్వాత మహిళల యొక్క పాత్ర ఏంటి ఇప్పుడు మీరు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమం మొత్తంలో? మహిళలు మేము మగోళ్ళు అంతా చేరి అప్పుడు ఆ కొండలో ఫస్ట్ మేము కంజులు కట్టేదానికి ప్రారంభం చేసి వాళ్ళు మేము కూడా కలిసి మహిళలు మేము కలిసి కట్టుగా దాని ప్రయత్నం చేసినప్పటి మేము బాగా పరిచయంగా అందరూ కలుసుకొని పని చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా ఊర్లో కూడా వాళ్ళు ఏదైనా ఈ గ్రూప్ సంఘాల్లో కానీ వాళ్ళు పక్కన ఒక దేవస్థానం కాడ కూర్చుంటారు. మేము మగవాళ్ళము ఏదన్నా సీటు పెట్టుకునే దానికి ఒక పక్కన ఉంటాము. వాళ్ళు మేము కలిసి కట్టుగానే ఇప్పుడు ఏందన్నా కానీ ఒక ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగిందనుకో, ఒక ఇంటికాడ ఎవరికన్నా ఆ ఊర్లో ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం జరిగినా మేము అందరం పోతాము, పని చేస్తాం. వీళ్ళు వాళ్ళు అనుకోకుండా అందరం ఒకే కులంగా కట్టుగా పని చేసుకొని మాకు కొండ సంస్థ ఎప్పుడు ప్రారంభం చేసినా అప్పటినాక మేము అదేగానే నేను రెడ్డి అట్లా అనుకోకుండా అందరము పేదోళ్ళు సౌకర్యాలు అంతా ఒకటిగా కలుసుకొని ఇంకా దగ్గర ఇంకో పని ఉంది, ఆ పని ఈ పని రెండు కమాండంగా పని చేసుకొని ఇది చేస్తూ ఉంటాం, కార్యక్రమాలు అన్ని నడిపిస్తున్నాం. ఓకే సో ఇంకోటి యువకులు ఏంటన్నా, ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి యువకులు ఏంటి, వాళ్ళకి దీన్ని ఒప్పుకుంటున్నారా కట్టుబాట్లని, తర్వాత మీరు అన్నటువంటి విషయాలు? అసలుకు ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, వాళ్ళంతా ముందు కొంచెం పిల్లగా ఉండేవాళ్ళు ఆ కొండకి వచ్చి ఏదో చూస్తామని పనిచేస్తున్న వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, వాళ్ళు మళ్ళా మాలేకి వచ్చి ఏదన్నా అక్కడ బెంగళూరులో అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్న మాలేకి వచ్చి ఏదన్నా సహాయము చేస్తారు. బాగుంది అని అభివృద్ధి లేకుండా చెప్పని వాళ్ళు కూడా మాలే కలిసి ఎవరన్నా ఏదన్నా ఇబ్బంది కలిగినా వాళ్ళు కూడా వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా బంధువులు చనిపోయినా ఇట్లా దానికి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ యువకులు కూడా మాతో మాదిరి పనిచేసి మాలాగానే ఉంటారు వాళ్ళు కూడా. So he is saying that the women from the beginning, women and men together, they participated in the restoration activities. Even the meetings he is mentioning, women's they have a self-help groups as well as the men, the institution will sit. So that they will work together. That is what he is saying. In the restoration activities, in the protection also, women role and the youth role is very critical, because the fire, whenever the fire will happen, so they're supposed to run to and he climb the hillock and put up the fire. So that time youth is the main critical role in this, and they are saying that he's saying that during that time the children they become younger now, they are doing jobs in Bangalore and other cities. Still they will come back and they will join us in this particular village institution. So that is what he is saying. Thank you. Yeah. Yeah, thank you, Gopal ji and Ramesh ji for the wonderful presentation. We'll move on to the final presentation for this session. This is by Samar Singh Bhatia ji, all the way from Rajasthan. Bhati from all the way from Rajasthan. So he and his
the community are working on the Great Indian Bustard, which is the state bird of Rajasthan. Hello. Yeah. And so they have been working, their team is working to increase awareness among the communities. So he's going to share the story. Welcome back, Samaj Singh ji. आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं. और अगर आपका बैंडविड्थ, अगर ये वीडियो अटक रहा है वीडियो, तो आप वीडियो ऑफ भी कर सकते हैं. हम लोग प्रेजेंटेशन यहाँ से शेयर कर देंगे. जी, हम राजस्थान के सुमेर सिंह जी, आपका आवाज अटक रहा है. सुमेर सिंह जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, तो आपको शायद बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी. जी, आपका जी कर दिया है. आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है. हेलो. हाँ, तो मेरा नाम करता हूँ मैं. अभी भी आवाज अब फिर से. Seems like so Sumer Singh ji has dropped off. We'll wait a couple of minutes. Hello. जब तक सुमेर सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं, does anybody have questions regarding presentations that have been taken till now? You can either you can type it in the chat box or raise your hand. हेलो. जी सुमेर सिंह जी. हाँ, मेरा नाम सुमेर सिंह है. जी जी जी. और मैं सावता से बिलोंग करता हूँ. मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन पे जो यहाँ का राज्य पक्षी है, हमारा गोडाउन, उसके विचार बताना चाहता हूँ. आवाज आ रहा है? हेलो. आ रहा है, थोड़ा सा अभी भी कट रहा है आवाज. अभी आ रहा है? हाँ, आ रहा है. प्लीज कंटिन्यू. हाँ, ये गोडाउन राज्य पक्षी है जो यहाँ हमारे यहाँ जैसलमेर के अंदर बहुत पहले, आज से 10-15 साल तो पहले हजारों की संख्या थी, और ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, मतलब विलुप्ति के कगार पे है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
हाँ, तो इसका मेन जो इसका हैबिटेट है, ये वजनी पक्षी है, कम से कम 20 किलो के वजन के बराबर रहता है इसका पक्षी का वजन। और ये हैबिटेट ग्रासलैंड, जो खुले मैदानों में विचरण करने वाला पक्षी है, जहाँ ओरंस जो बड़ा सेवन घास के जो ग्रासलैंड रहते हैं, जो जैसलमेर के अंदर और बाड़मेर के कुछ मरुस्थलीय इलाकों में भी इसका विचरण केंद्र है। और पहले तो यहाँ जो पूर्वी राजस्थान में भी कोटा और यहाँ अजमेर इस इलाके में थे, लेकिन वहाँ संख्या की बिल्कुल कम हो गई है। और भारत में और भी कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ इलाके, गुजरात के उस जगह पे भी ये पक्षी था, लेकिन अब सिमट करके ये संख्या बहुत कम हो गई है, 120 के करीब आ गई है। और ये भारत में पाकिस्तान में कुछ इलाकों में पाया जाता है, लेकिन भारत में ये जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान के ही इलाके में बचा है। तो इसको बचाने के प्रयास भी कर रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ, इसका लेकिन ये आज के युग में विकास होना चाहिए। विकास के बदले हम ये नहीं चाहते कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास इन पक्षियों की जो भी जान को खतरा बन गया है, हाई टेंशन तारें जो निरंतर इन पक्षियों को खत्म की जा रही है। और इसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की थी, और उसका इनको ये भी बताया गया कि इसको अंडरग्राउंड किया जाए। और ये कम से कम 8-9 पक्षी ये गोडाउन खत्म हो चुके हैं इन हाई टेंशन लाइनों से। तो इनको अंडरग्राउंड करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से और न्यायपालिका पे भरोसा भी है कि इन पक्षियों को बचाने के लिए कुछ न कुछ कदम ठोस तरीके से उठाए जाएंगे, तो ये जरूर बच सकते हैं। और हैबिटेट भी इनका बचाया जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो जगह है जहाँ जैसलमेर के अंदर इसके ग्रास लैंड के बड़े बड़े के अंदर है, वहाँ इसको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेवन घास का भी प्रोजेक्ट के तहत अभी वो कम हो गई है, तो उसको लगाना और इनके लिए विचरण के अंदर रखना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्योंकि इसकी रेगुलर डेथ हो रही है, ये निरंतर कम हो रहे हैं, तो बहुत ही सोचने पर विषय हो गया है कि इसको किस तरीके से बचाया जाए। तो पब्लिक जागरूकता भी फिर होनी चाहिए। और हमारा टीम कोशिश कर रही है कि इसको किसी भी सूरत में, लेकिन हमारे आंखों के सामने जब ये मरते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है, क्योंकि इसको बचाएं तो कैसे बचाएं। सरकारें इसके ऊपर कानून बहुत लेके आ रही है, मतलब प्रोजेक्ट भी बहुत लेके आते हैं, लेकिन जगह पे जो कार्य है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए निरंतर हम प्रयास भी कर रहे हैं इसमें, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क और ये यहाँ पे कुछ WAI और ये वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी NHS वगैरह कुछ काम कर रहे हैं। तो हमें भरोसा सबके ऊपर है कि ये काम जरूर कुछ न कुछ इसके ऊपर आया अच्छा निर्णय लेंगे और इसको कुछ बचाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये आंखों के सामने जा रहा है, संख्या बिल्कुल कम रही है। और ये इसमें जो 2010 के बाद में एक विश्नोई कम्युनिटी जो है इसके ऊपर इन्होंने काम संरक्षण में शुरू किया था, तो हम भी जुड़े उनके साथ और ये बहुत ही अच्छा हमें लगा। हमारे साथ अभी राधेश्याम प्रेमाणी मेरे साथ ही है, तो मैं उनको भी बोलूंगा। और क्योंकि यहाँ एक जब हमारी एक देगराय है जैसलमेर में, उसमें ये गोडाउन खत्म हो गई, तो हमने एक स्मारक भी बनाया था जो विश्व का पहला स्मारक इसकी यादगार में। क्योंकि हम जब ये हमारे यहाँ ओरणों में ये खत्म होती हैं और तो ये हम इसकी श्रद्धांजलि और दुख भी होता है हमें कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ डायनासोर की तरह ही न रह जाए। इसको बचाना भी बहुत बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी एक दायर है और हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी मिलकर के सब यहाँ के पूरी जनता मिलकर के इसके ऊपर जागरूकता का काम कर रहे हैं। और कोशिश है हमारी, हमें सरकार से भी ये अपील रहेगी कि इसके ऊपर कुछ ठोस निर्णय लिए जाएं और इसको बचाने में इनको तारों को जो ट्रांसमिशन लाइन है इनको अंडरग्राउंड की जाए। तो
ये आर्क जोन घोषित करके, जहां इस गोडाउन विचरण करता है उसके अंदर को आर्क जोन घोषित करके उसको बचाया जाए। विकास दूसरी जगह करें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जो गोडाउन की जगह है उसको बचाया जाए। नेक्स्ट प्लीज। मेन चीज ये है कि ये ग्रासलैंड का ही है, और यहाँ ये इसका ब्रीडिंग सेंटर भी अभी WI ने, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने शुरू किया है, तो उनमें से भी कुछ बच्चे खत्म हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर भी गाइडेंस और अच्छी चीज करके इनको बचाया जाए। इसको किसी भी सूरत में ये बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो बच्चे बड़े करके भी छोड़ेंगे कहाँ, उनको छोड़ने के लिए भी जगह चाहिए। ग्रासलैंड बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ जो अंधाधुंध ये कंपनियों को अलॉटमेंट किए जा रहे हैं सोलर प्लेटों को, तो ये गोडाउन को कहाँ छोड़ेंगे। मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये जहाँ विकास कर रहे हैं लेकिन विकास विनाश की तरफ जा रहा है। जिस चीज के लिए अपन सोच रहे हैं कि खरबों रुपए इसको बचाने में लगा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह नहीं बचाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएगा। बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन इसको बचाना जरूरी है। और हमें सरकार से और सभी NGO से और सब मतलब पूरी जनता से यही अपील है कि इसके ऊपर कुछ ठोस निर्णय लेकर के और इसको ध्यान में रखते हुए, गोडावण को ध्यान में रखते हुए कहीं ये विलुप्त ना हो जाए। ये पक्षी 120 रहे हैं लेकिन आने वाले दिन धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ न कुछ ठोस निर्णय लिए जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरे को ब्रीड शेयर अवार्ड जैसे जो मैंने आशीर्वाद मिला सभी मेरे टीम को, मतलब हम हमेशा हम एक वर्क करते हैं तो लोग और NGO सब आगे आकर के हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, और ये हमें हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो हमें बहुत बहुत इनका आभार सभी का, क्योंकि ये चीजें हम वन्य जीव पशुपालन और सभी इस लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, तो हमें बड़ा ये अफसोस मतलब एहसास होता है कि हमें बहुत ही खुशी है कि ये चीजें हमें मिल रही है, और आगे भी हम निरंतर ऐसे काम करते रहें। और ये हमारा जो हैबिटेट है और ये जो सब चीजें हैं, प्रकृति की जो धरोहरें हैं ये बच्चे, और ये हमारा वन्य जीव है वो बच्चे, हमें इससे ये प्रेरणा भी मिलती है कई लोगों से। अब मेरे साथी है राधे श्याम जी, वो आपको बताएंगे। राधे श्याम जी पैमानी। गोडाउन पक्षी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में ही पाया जाता है, जो पहले काफी राजस्थान में भी काफी जगह पाया जाता था, और इनकी जो अंतिम गणना हुई थी 2015 में, तो उसमें गुजरात में 25 के करीब इनकी संख्या बताई थी और राजस्थान के अंदर 120 थी। तो अभी बाकी जगह से कुछ आंध्र प्रदेश में भी था और कुछ कर्नाटक में भी, तो बाकी सब जगह से वो लुप्त हो गया। और गुजरात में अगर कुछ बचे हैं तो सिर्फ फीमेल ही, तो वो जैसलमेर के अलावा और कहीं भी प्रजनन नहीं कर रहे हैं। और इनका मुख्य जो इनका हैबिटेट है वो सेवन घास में रहना ये सबसे ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर 3162 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा इनकी पॉपुलेशन पोखरण क्षेत्र में भी है, और जहाँ पर हम इनके बचाव का प्रयास कर रहे हैं। तो अब तक की इनकी जो मोर्टेलिटी हुई है उसमें 80% मोर्टेलिटी है वो हाइटेंशन वायरस से टकरा के हुई है। तो हमने कई पर्यावरणविदों, साइंटिस्ट लोगों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इस बारे में अवगत करवाया कि ये जो मुख्य है जो इसकी समस्या है वो हाइटेंशन वायरस से टकरा के ये पक्षी खत्म हो रहा है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि जैसे हम हमारे आसपास के रहने वाले जो जितने भी वन्य जीव है तो उनको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी है। तो वैसे ही हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी वन्य जीव है तो उनका संरक्षण करें। और बाकी फेरल डॉग भी इनके लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके अलावा
दूसरे वन्य जीव है उनको भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो थार डेजर्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बाकी सब जगह से अलग है, और यहाँ कंजर्वेशन का काम करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो अभी सरकार का जो विचार है वो कैप्टिव ब्रीडिंग पे है। तो कैप्टिव ब्रीडिंग में हमने बच्चे अंडे हैच भी कर लिए, तो उसको रिलीज करने के लिए हैबिटेट भी तो होना चाहिए। तो हैबिटेट अभी बहुत अंधाधुंध सोलर, विंड मिल, पावर लाइंस काफी ज्यादा की तादाद में आ रहे हैं। तो लग रहा है कि इन पक्षियों के लिए अभी जीना बहुत और ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर समय रहते ये हाई टेंशन वायर अंडरलाइन नहीं होंगे तो हम इस पक्षी को बचाने में बहुत ही मुश्किल है इस पक्षी को बचाना। थैंक यू। अगर एक वीडियो जो सुमेर सिंह जी का, अगर वो, हेलो आवाज आ रही है? जी जी जी। ओके, तो अभी आपने सुना, सुमेर सिंह जी को सुना, और उनके साथ ही शायद वीडियो अभी हो पाएगा या नहीं, मतलब नेटवर्क का जो यंग साथी इनके साथ जुड़े हुए हैं, राधेश्याम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इनके पूरी ग्रुप है, इतना युवा पीढ़ी साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, और ये प्रयास मुश्किल जरूर दिख रहा है, लेकिन जरूर ये बोल रहे हैं एफर्ट्स हैं जो और नेटवर्क को जोड़ के कैसे हम जोड़ के कर पाए। तो छोटा सा वीडियो अभी हम सबके सामने रख रहे हैं जो सुमेर सिंह जी का, ये वीडियो इनफैक्ट राधेश्याम जी ने ही कैमरे से शूट भी किया है। स्टार्ट प्लीज। इस वीडियो में आपको काफी सारे पीछे हाई टेंशन वायर और पवन चक्कियां दिख रही है। Just to brief, just आवाज आ रही है ना? Just to brief, it's an effort of, as we know that it's the Great Indian Bustard is an endangered red list bird available, which is the conservation for that is very much required, and these efforts are being taken up by Sumer Singh ji, Radheshyam, and a number of group of around 30-40 youths over here. And they, as this Great Indian Bustard is, it's also a like state bird, and still it needs lot of efforts are to be made for conserving it. So how can these efforts can be further on taken up at the state level or at the high level, where government policies are there, the provisions are there, like efforts from forest department, like a desert national park, the breeding centers are being made, but it needs a more appropriate or important things, like its restoration of its habitat of grasslands, the orans needs to be conserved and protected, because these are the breeding places of these birds, where these grasses are the places where it hatches its eggs and stays there. It's a habitat of having, like they feed on reptiles, snakes and small scorpion, bichon ke saath. So it needs to be protected, and these are small efforts which they are taking up since last 7-8 years, but still they need, they have been discussing that they need more support, more support from the community also to take it up, as well as from the government. So that's what they presented. Any queries? And यहाँ पे we have और 4-5 गांव से भी लोग हैं जो अगर queries हैं कुछ, so further open for the discussion. Yeah, thank you very much, सुमेर सिंह जी, राधेश्याम जी। एक सवाल आया है कि जो कम्युनिटी है
और जो ब्रीडिंग सेंटर है या डिपार्टमेंट है उनका रिलेशनशिप कैसा है या पार्टनरशिप कैसा है आपके साथ, एंड जो आजू बाजू के गांव वाले हैं उनकी क्या राय है कंजर्वेशन को लेके बस्टर्ड की, उससे कुछ चर्चा कर सकते हैं? लोग चाह रहे हैं कंजर्वेशन को लेकर। लोगों की जो मेहनत है उसी की वजह से पोखरण एरिया के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क से भी ज़्यादा बस्टर्ड है, पर इन पावर लाइन से जो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो उन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, या फिर और भी जो कई सोलर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वो पता नहीं इनको गवर्नमेंट से जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं हमने तो परमिशन दिया नहीं, तो पता नहीं वो किस परमिशन से आ रहा है। और जो जीआईबी आर्क एरिया है उसके आर्क एरिया के अंदर से भी कुछ पावर लाइन्स है वो गुजर रही है। आप लोग और कुछ जोड़ना चाहते हैं? कैसे आप देखते हैं गोडावण बचाना से, क्या आपको आपके क्षेत्र में क्यों बचाना चाहते हैं? गोडावण पक्षी है वो किसानों के लिए किसानों का मित्र जो माना जाता है, जिसमें ये इसका जो भोजन है जो मुख्य रूप से बिच्छू, छोटे सांप और कीड़े मकोड़े, और जैसे पिछले 2 साल पहले जो एक टिड्डी जैसी बहुत बड़ी समस्या आ गई थी जिसमें किसानों के फसलों पे काफी नुकसान पहुंच रहा था। तो हमारा मानना है कि अगर इस समय अगर 4-5 हजार अगर गोडाउन होते तो गवर्नमेंट को इतना प्रयास भी नहीं करना पड़ता टिड्डी को मारने का, क्योंकि ये टिड्डी है जो गोडाउन का बहुत पसंदीदा भोजन है। तो किसानों को भी काफी मदद मिलती है गोडाउन से। ज्यादा टिड्डी है, ज्यादा कोरोना ने टिड्डी पसंद है। हाँ, कोरोना टिड्डी खाया जाएगा फसल बचेगा। गोडाउन से किसानों को बहुत ही फायदा होता है, उसमें फसलों में भी उन्नति होती है। तो गोडाउन होता है तो जितने गोडाउन ज्यादा होंगे तो उसमें फसल की पैदावार अच्छी बनेगी, उसमें कीड़ी नहीं लगेगी और भी उसमें कीटाणु जीव जानवर कम रहेंगे। तो गोडाउन को बचाने के लिए सेवन घास भी जरूरी है। थैंक यू। धन्यवाद समर सिंह जी और सभी उनके साथियों के लिए। राजस्थान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, गोडाउन को बचाने के लिए काम करते रहिए और इंस्पिरेशन बनते रहिए हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। सो here we end all the presentations for this session. So ये संपितिया भाई जी है क्या? अभी भी समतिया भाई जी है? Anybody has questions, please raise your hands so that we can allow them to speak. We can give the permission from here. Please let us know. Namaste. My name is Sidha, and thank you everybody for. Can you all listen? You heard me? Yeah, we can hear you, Sidha. Yes, Please go ahead. thank you, Rahul. Yes, so namaste and thank you everybody for the wonderful work that they have been doing. I'm particularly interested about Sri Gopal Reddy's effort to reforest the hillock, and I'm hoping to get in touch with him and his team to replicate something similar in Pune district that I'm working in. So if that can be kindly arranged, please, I'd be most happy.
Yeah, definitely we can do that for you, Sidha. Yeah. So one specific question about his activity is, so I understand that it was so there is a tree grower corporation that he developed, and they so what is it? Are they generating any revenues out of those trees for the village community, or how does that work? Ramesh sir, would you like to answer the question? Yeah. Actually, whatever NTFP collecting from the hillock, that is like a direct income to the households. Okay. There is no income to the institution as such. So whatever ecosystem services are coming from the hillock, yeah, like seepage water and the other services, it's like a to the entire community and the ecology. Specifically, they have their own corpus money with them. So that money they are revolving within the members. So that is how it's a minimal interest they will collect, 1 rupee interest per month. Achha. That is how the corpus amount is increasing. Again, they are doing lot many development activities with those monies also, spending some amounts. Okay. So there is no direct income to the institution from the hillock. Got it. Take care. I would have a lot of follow-up questions on this, but perhaps I can get in touch with you and we can speak about this on one-on-one then. That would be most helpful then. Definitely. Thank you again, Ramesh. Thank you so much for your time. Hello. Hello. Please go ahead. There is a question from Madhya. A question like suggestion. Madhappa PS. Yes, suggested for having some. There's in the chat box. How can the idea of citizen science program? That's a thank you for that suggestion and taking up as the Bustard conservation. Is he there, Madhappa? Yeah, Madhappa is there. Madhappa, please go ahead with the question. Please, we can discuss. Hello. Yeah, Madhappa, sir. You are on mute, sir. Yeah, he's speaking. Yeah, sorry, my mic wasn't working. It was just a question regarding how citizen science programs can be strengthened to work towards protection of the bustard. Engaging the community on a more of a scientific level and just collating traditional knowledge and sort of moving it with scientific information and data. So how can that be worked on was more of a question of mine. Yes, sir. Thank you. But these are the things which here a few organized, like I explained that BNHS and people are there, but more of them, we need to engage. It would be good to work more with you all and have more suggestions and help us in taking up these interventions with these. Communities are engaged, they are having some connects and working, but more scientifically like breeding centers and those are there, but more of your suggestions. That's very nice. We can work towards that. Yeah. Anybody with more questions here? And thoughts, suggestions, please do raise your hands and we'll let you in. Hi.
There was another question that we were all wondering about. This is for all speakers who are still with us, all our panelists and our facilitators. So we've seen one example of a landscape level forum from Nagaland, where they came together and brought many stakeholders together to work on doing what they're doing. So in the other areas that we heard presentations from, what do the speakers or the facilitators think about federations or landscape level forums where different actors can come together and work together so that the work that is actually happening in the villages that we've heard about can actually spread to other places too? जो suggestions मतलब it was a good to hello. Yeah, please go ahead. Please go ahead. The landscape level issues like जो bat conservation का जो देख रहे थे हम लोग, चमगादड़ों का जो बचाने का जो काम हो रहा था, और जो एग्जांपल्स थे फ्रॉम उत्तराखंड, वन गुज्जर, तो आइडियाज तो काफी लग रहे हैं यहाँ पे। उसे अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे इसको लेके कि कैसे, क्योंकि जब राधेश्याम जी से बात हुई तो ये बोले कि हाँ हम कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है और लोगों को इस मुद्दे से जोड़ने का, है ना राधेश्याम? तो कैसे उसके लिए आइडियाज जरूर, कुछ सुझाव अभी इस प्रेजेंटेशन से समझ में आ रहा है कुछ, और आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग में से कुछ बोलना जोड़ सकते हैं। हेलो, यस, ऑडियो गो अहेड। एक्चुअली जो अब लोग बोल रहे थे जो फेडरेशन के बाद, एक्चुअली हम लोग जो लैंडस्केप के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी ग्रुप्स है या फिर फेडरेशन है, जैसे कि पीड़ो हो गया, जो कि भूइया ट्राइब्स का जो अपना खुद का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, एक बॉन्डिंग रहता है, और वो अगर हम एक पीढ़ों को अगर हम कन्विंस कर पाए तो क्या होता है, वो एक गांव में सीमित नहीं रहता है, एक पूरा कम्युनिटी में वो फैल जाता है। वो हमारा जो थॉट्स है और हमारा जो इच्छा है, हमारा जो मोटिवेशन है, वो एक पूरा कम्युनिटी में फैलता है और एक कलेक्टिवली हम वो काम कर सकते हैं। जैसे कल ही हम बोल रहे थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, जिसके वजह से फॉरेस्ट फायर फैल रहा था, या फिर हम लोग जो सॉइल वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं, तो एक गांव में करने से कुछ फायदा वैसा होता नहीं है, तो अगल बगल में सब गांव में वो करना पड़ता है। तो इसीलिए हम जो लोकली अवेलेबल ऑलरेडी फेडरेशन या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी अपने काम में इन्वॉल्व करते हैं। Yeah, thank you, Saswadik. Thank you everybody for the wonderful presentations. I think we can conclude this session here. It has been a very wonderful session. End of the day, we like to say that जो भी बातें हुई है कि एक इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर सिस्टम्स, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, एक ट्रेडिशनल नॉलेज की तरह है, एंड इन्हें बस एक अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से इनका सिग्निफिकेंस और नेचर से जो नाता है वो एक बार अगर समझ में आए तो और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ऑल द प्रेजेंटेशंस। आज फिर दिन हम इसके बाद हमारे पास अभी आफ्टरनून में भी सेशंस है, जिसका थीम है
कॉमन्स एंड लाइवलीहुड, ये आई थिंक 2:30 से शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज डू ज्वाइन दिस प्रेजेंटेशंस एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबडी। एक फीडबैक फॉर्म आएगा सब लोगों को, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, थैंक यू।